हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में हम लीनियर पीडीई का ऑफ ऑर्डर 1 का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। अभी तक हम जो कर चुके हैं वो ओरिजिन ऑफ पीडीई पढ़ चुके हैं, वेरियस डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, classification of definitions, linear, semi-linear, quasi-linear, non-linear, etc. and derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary constant and by arbitrary function, ये भी हम कर चुके हैं। Cauchy's problem जो कि uniqueness and existence problem से related है, that also we have done, जिसमें कि हम चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन या नहीं, एंड देन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी पढ़ा था कि हम मानते हैं z इज इक्वल टू 5xy बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन सरफेस है, और एक फंक्शन अनदर है fxyz इज इक्वल टू से 5xy माइनस z, ये एक एग्जाम्पल की तरह। तब हम ये देखते हैं कि del f इज द नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, जहाँ की डेल एफ क्या है, डेल एफ अपॉन एक्स, डेल एफ अपॉन वाई, डेल एफ अपॉन जेड, जो ये वैल्यूज़ हैं पी क्यू एंड -1, ये डी आर्स हैं ऑफ द नॉर्मल टू एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 5xy। सो ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ होगा। इसे एक प्रॉब्लम के फॉर्म में भी कह सकते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ 5xy इफ देयर एग्जिस्ट सरफेस z is equal to 5xy which passes through the curve C with parametric equations, and at every point of which the direction pq minus 1 of the normal is such that fxyz pz is equal to 0। so ये प्रॉब्लम के फॉर्म में भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ी थी, pp प्लस qq is equal to r, and this is Lagrange equation, and then auxiliary equation dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r, and इसमें टाइप 1 to 4 तक के हमने केसेस पढ़े थे जब इनको सॉल्व करने के लिए कंडीशंस हैं। टाइप 1 में हम मानते हैं कि वन ऑफ द वेरिएबल is either absent or cancels out from any two fractions of the given auxiliary equation। तो उस केस में हम कैसे इंटीग्रल करते हैं। सेकंड केस में हमने एज्यूम किया था कि सेकंड इंटीग्रल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट u एंड v, सो टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस। इन थर्ड में वी सी multipliers that denominator is 0, then numerator will be 0 by applying those multipliers, and in last we had seen that numerator is the exact differentiation of the denominator। इस तरह की सिचुएशन और हमने उस पर एग्जांपल्स भी किए। इस वीडियो में हम करेंगे, पहले पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स? First is integral surfaces, passing through a given point, passing through a given curve। This is the Cauchy problem। इसमें हम दो मेथड्स देखेंगे। सेकंड है सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू ए गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस।
एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। देन हम ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ऑफ द सॉल्यूशंस of PP plus QQ is equal to R, and of the system of equations dx upon P is equal to dy upon Q is equal to dz upon R, and to establish a relationship between them, between these two. देन इसका एक ये तो ज्योमेट्रिकल है, एक अनदर डिस्क्रिप्शन भी होगा, अनदर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ Lagrange's इक्वेशन PP plus QQ is equal to R. Then last है the linear partial differential equation with n independent variables and its solution. तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रल सरफेसेस पासिंग थ्रू ए गिवन करो। इसे हम द कॉशी प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो जैसे कि PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, इस इक्वेशन का हमने अभी पीछे जो आर्टिकल किए हैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर हम दो मेथड्स यूज करेंगे, जिसमें कि जो हमें जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुए थे उन सॉल्यूशंस को यूज करके वी विल बी फाइंडिंग द इंटीग्रल सरफेस। which passes through a given curve. तो ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रल सरफेस को ऑब्टेन करना जनरल सॉल्यूशंस के हेल्प से, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं टाइप 1 टू टाइप 4 में, वेयर वी हैड यूज्ड दिस लैग्रेंजे इक्वेशन एंड गॉट द जनरल सॉल्यूशन। सो मेथड 1 है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें लैग्रेंजे इक्वेशन दी गई है, ये गिवन इक्वेशन है, और फिर हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद हम इंटीग्रल करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, एंड दैट इज u(x,y,z) इज इक्वल टू c1 एंड v ऑफ x,y,z इज इक्वल टू c2। ये जनरल सॉल्यूशंस है। अब हमें इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करना है। जो कि पास कर रहा है एक कर्व, so which passes through a curve through the curve which passes through the curve। और कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन हम ले रहे हैं, whose इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म is x is equal to xt, y is equal to yt, z is equal to zt है। पैरामीटर है।
अगर हम ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से u और v में से एलिमिनेट कर देते हैं t को। सिंगल पैरामीटर है ये, इसे हमने एलिमिनेट कर दिया। एंड आफ्टर एलिमिनेशन व्हाट वी डू, वी गेट ए रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2। अब हम ये C1 एंड C2 को रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जो कि ये हैं u x y z विच इज गिवन बाई a। तो जो अब हमें इंटीग्रल सरफेस मिली, दैट इज द रिक्वायर्ड सरफेस। we get the required integral surface। पहले एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, देन वी विल सी मेथड 2। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2yz minus 3p plus 2x minus zq is equal to y 2x minus 3 which pass through the circle z is equal to 0, x square plus y square is equal to 2x। so यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं dx अपॉन 2y z minus 3 is equal to dy अपॉन 2x minus z is equal to dz अपॉन y 2x minus 3। अब हमें देखना है कि किन्हीं दो को लेकर इंटीग्रेट कर सकते हैं, then we will do that, otherwise we will find out मल्टीप्लायर्स। एंड जो हमने टाइप 1 टू टाइप 4 केसेस लर्न किए थे उन्हीं में से किसी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये y और x में है, एंड दिस इज y विल कैंसिल आउट एंड z विल गो विद z, सो वी कैन टेक फर्स्ट एंड थर्ड। सो dx अपॉन 2y z माइनस 3 इज इक्वल टू dz अपॉन y 2x माइनस 3। so y cancels and cross multiply करें, so this gives dx into 2x minus 3 is equal to 2z minus 3 dz। so we can integrate it 2x square by 2 minus 3x is equal to 2z square by 2 minus 6z plus c1। so we can simplify and get x square minus 3x minus z square plus 6z। तो इसे हम लिख सकते हैं x square plus z square minus 3x plus 6z is equal to c1। अगर हम सेकंड देखें, इसमें 2x minus z है, मीन्स कॉम्बिनेशन है, सो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए मल्टीप्लायर्स की रिक्वायरमेंट है। सो मल्टीप्लायर्स जो है, पहले के लिए अगर हम 1/2 लें, सेकंड के लिए y लें एंड थर्ड के लिए -1, देन व्हाट हैपन्स 1/2 dx प्लस y dy एंड माइनस dz अपॉन y, बिकॉज 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 कैंसिल आउट, z minus 3 एंड देन इन दिस विद y प्लस y 2x minus z, then minus, so minus y 2x minus 3, so 2xy this cancels out, plus 3y and here minus 3y cancels out, then yz with minus and yz with plus, so this is 0, denominator is 0। if denominator is 0 it means numerator is also 0। so 1/2 dx plus y dy minus dz is equal to 0। now we integrate it। for integration we get x by 2 plus y square by 2 minus z is equal to c2 dash। we cross multiply and this 2 also goes into constants, x plus y square minus 2z is equal to c2।
अब हमें C1 एंड C2 में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है एंड सर्कल की इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है, सो हम उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। सो इक्वेशन दी गई है z इज इक्वल टू 0, सर्कल की इक्वेशन, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू t, तो y जो होगा 2t माइनस टी स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब यहाँ से वैल्यू C2 की फाइंड आउट करें, सो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू C2, दिस इज t इन टर्म्स ऑफ t प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर minus 0 because z is 0 is equal to C2. So this becomes 2t and plus t is minus 3t is equal to C2. This becomes minus t square plus 3t is equal to C2. And अगर हम C1 वाली इक्वेशन देखें, there t square minus 3t is equal to C1 because C1 की इक्वेशन थी एंड टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू C1, तो दो इक्वेशंस ये ऑब्टेन हो गई। सो अगर हम यहाँ पर देखें C1 C2 में रिलेशनशिप है C2 इज इक्वल टू माइनस C1, और हम कह सकते हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 ऑब्टेन हो रहा है। नाउ वी एलिमिनेट t which has been already done because C1 C2 is equal to 0. So what we are doing, x square minus 3x minus z square, this was minus z square plus 6z is equal to C1, and second is x plus y square minus 2z is equal to C2. So this comes, if we add them, x square minus 3x plus x terms together, then z and then y, plus y square minus z square plus 6z and minus 2z is plus 4z is equal to C1 plus C2 जो कि 0 के इक्वल है। So this is equal to 0 and this is the solution of the question. Required integral surface. Now we see method 2. Method 2, let we have the same Lagrange equation, PP plus QQ is equal to R. This is the given equation, and Lagrange auxiliary equation से हमने दो independent integrals obtain कर लिए हैं. So the two independent integrals are, that is the solution, u x y z is equal to C1 and v x y z is equal to C2. Now हमें obtain करना है integral surface passing through the curve, which is determined by the following two equations. To obtain the integral surface passing through the curve which is determined by the following two equations. Phi xyz is equal to 0 and psi xy is equal to 0. एलिमिनेट करना है हमें इन चार इक्वेशन से एक्स वाई जेड को, जो कि ये यू वी फाई साई, दीज फोर इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है। एंड एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है C1 एंड C2 के बीच में।
एंड उसके बाद हमें फाइनली C1 को रिप्लेस कर देना है u, बिकॉज C1 इज u एक्स वाई जेड, एंड y को ये रिप्लेस कर देना है C2 को v एक्स वाई जेड से. When we do this, we get the desired integral surface and get the desired integral surface. Examples on integral surfaces. Passing through a given curve. The Cauchy problem. पास्ट ईयर में कई क्वेश्चंस आए, 2020 का क्वेश्चन लेते हैं. Find the integral surface of the PDE x minus y square p plus y minus x into x square q is equal to x square plus y square into z. Passing through the curve xz is equal to a cube and y is equal to 0. So first we write auxiliary equations. So Lagrange's dx upon x minus y square is equal to dy upon is equal to dz upon, and here it will be y minus x square and x square plus y square into z. So we see here combination of x and y are there. It means we need multipliers. We cannot integrate directly. Nothing will cancel out like this. So we write dx minus dy. We take first two, and then this will be x minus y common and y square, because it is minus, so this will be same, minus will change the sign, plus x square. And if we see in this will cancel out, which is equal to dz upon x square plus y square into z. This will cancel out, and it is dx minus dy upon x minus y is equal to dz upon z. And if differentiate this is differentiation of this dx minus dy. So d of x minus y upon x minus y is equal to dz upon z. So we can integrate it, and integration gives log x minus y is equal to log z plus log c1. So this is x minus y upon z is equal to c1. And now we take first two fractions. So if we see if this cancels out, then we will have the separate, and we can integrate it. So this will be minus sign here, x minus y, this will cancel out. So dx into x square is equal to minus y square dy, which is x square plus y square
x square dx plus y square dy is equal to 0. Integrate it. X cube upon 3 plus y cube upon 3 is equal to c2. So from here we get x cube plus y cube is equal to, we put it dash, and this is c2. Now surface is xz is equal to a cube and y is equal to 0. This is the surface or curve. This is the curve. So parametric form of this, say nothing has been said about x or z, so we can say z is equal to t, y0 is given, then x is equal to a cube upon t. So this is the parametric curve. Now we substitute these values. And we get, so we can find out relation between C1 and C2 with the help of parametric form. So we can write x minus y upon z is equal to C1 and x cube plus y cube is equal to C2 and y is equal to 0. This is the curve, and z is equal to t and x is equal to a cube upon t. So now we want to find out relationship between C1 and C2. We put these values. X is a cube upon t minus 0 upon t is equal to C1. So C1 is equal to a cube upon t square, and from second, a cube upon t whole cube plus 0 is equal to C2. So if we get t from here and put in this, so t is equal to a cube upon C1 to the power half. We put in this a cube to the power cube and a cube upon C1 to the power cube and by 2 is equal to C2. We make a square of this, so C2 square is equal to a to the power 9 into a to the power 9 upon a to the power 9 upon C1 square. So this cancels out. So this gives C2 square is equal to a to the power 9 C1 cube. So this is the relationship between C1 and C2, and we will put in this x cube plus y cube. We make a square of this, so we just want to write C2 square. Square is equal to C2 square is equal to a to the power 9 C1 cube, which is equal to a9 x minus y from here, x minus y upon z whole cube. So we can write it cross multiply z cube x cube plus y cube whole square is equal to a to the power 9 x minus y cube. This is solution. Another example is of 2009 and 1994. Find the integral surface of x square p plus y square q plus z square is equal to 0. P is del z upon del x, q is del z upon del y. Which passes through the hyperbola
second equation of hyperbola is xy is equal to x plus y and z is equal to 1. सो पहले पैरामीटर, सो हम लैग्रेंज इक्वेशन लिखते हैं. लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस z स्क्वायर. So this is, suppose we take these two, it becomes x square x plus z minus 2 dz is equal to 0. So integration will give 1 upon x plus 1 upon z and minus 1 is equal to minus c1. So integration gives minus 1 upon x minus 1 upon z is equal to minus, or we can say 1 upon x plus 1 upon z is equal to c1. एंड अगर हम सेकंड और थर्ड ले लें, सो y माइनस 2 dy प्लस z माइनस 2 dz इज इक्वल टू 0. इट गिव्स 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू c2. सो दिस इज 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू c2. अगर हमें c1 c2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो इफ वी ऐड दीज टू 1 अपॉन x plus 1 upon y plus 2 upon z is equal to c1 plus c2. So we take LCM xy, x plus y plus 2 upon z is equal to c1 plus c2. So in the question the curve has been given, its curve is x plus y is equal to xy and z is equal to 1. So we put that value, so xy upon xy plus 2 upon 1 is equal to c1 plus c2. So it gives 3 is equal to c1 plus c2. We put this value and get the answer. This is equal to 3 is the answer. Or we can write here LCM here x y z and it gives yz plus xz plus 2xy and it is equal to c1 plus c2. So cross multiply, which is equal to 3. So we cross multiply and answer is yz plus xz plus 2xy is equal to 3xyz. सो c1 c2 को ऐड करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आई. एंड अगर हमने यहाँ पर इससे वैल्यू रख दी, सो दिस इज x प्लस वाई, ये एलसीएम ले लिया गया था इन दो का. सो x प्लस वाई को xy रख दिया, सो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 3 आ गया. 2 प्लस 1 3, तो ये आंसर में रख दिया. इसमें इज इक्वल टू 3 ऐसे ही लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3, या इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया एक्स वाई जेड और वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 3 विच इज c1 प्लस c2. तो ये आंसर हो गया. एंड सेकेंड, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड द जनरल इंटीग्रल ऑफ PD. दिस इज द इक्वेशन. पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना है विच पासेस थ्रू द लाइन दिस. सो जैसे कि अभी तक आइडिया हो गया कि काफ़ी इजी है, वंस वी अंडरस्टैंड इट इजीली कर सकते हैं. काफ़ी आसान है और मार्क्स इजीली ऑब्टेन किए जा सकते हैं. सो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx upon 2xy minus 1 is equal to dy upon z minus 2x square is equal to dz upon 2x minus 2yz. तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ मल्टीपल में है 2yz, so not easy to integrate directly, so we will find the multipliers. मल्टीप्लायर्स ऐसे कि
डिनोमिनेटर 0 हो जाए या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जाए. So if we see 2xy and here yz, so if we multiply it by z and this one multiply by x, and 2x square will come from here, so this will help and z will, so for this one, so this is z1 and x are the multipliers, z dx plus dy plus x dz upon this comes 0, 2xyz minus z plus z minus 2x square plus 2x square minus 2xyz. डिनोमिनेटर 0 इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 है. सो z dx प्लस dy प्लस x dz इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको. दिस कम्स, अगर हम इन्हें देखें, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0. सो इंटीग्रेट अगर करें, इट गिव्स एक्स जेड प्लस वाई इज इक्वल टू c1. अब हम दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेते हैं and let's see what can we do. We divide it by 2. We divide it by 2 here. So for third 1 by 2 it becomes x and yz. So we multiply second one with y, so yz will cancel out, minus plus, and here it is x, here we do by x, so this comes x dx plus y dy plus 1 by 2 dz upon 2x square y minus x, then in this y plus yz minus 2yx square, so this will cancel out, and plus x minus yz. So denominator 0, it means numerator x dx plus y dy plus 1 by 2 dz is equal to 0, and this is the differentiation of, so integrating this we get x square by 2 plus y square by 2 plus z by 2 is equal to c2. So we can write x square plus y square plus z is equal to c2. और अगर अब हम लाइन देखें, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 जो है लाइन है, एंड c1 एंड c2 हमें निकालने हैं. तो पहली इक्वेशन से दिस इज 1 इक्वेशन एंड दिस इज 2. पहली से आ गया z इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड से आया z is equal to c2 and x is 1, so 1 plus z is equal to c2. It means 1 plus c1 is equal to c2. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. इसमें अगर रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू c2. c2 is equal to 1 plus c1 and c1 is xz plus y. तो यही आंसर आ गया. एक और एग्जाम्पल है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस satisfying 4yzp plus q plus 2y is equal to 0 and passing through y square plus z square is equal to 1, x plus z is equal to 2. So auxiliary equation is Lagrange's dx upon 4yz is equal to dy upon 1
is equal to dz upon minus 2y, because when we write this equation, this comes 4yz p plus q is equal to minus 2y. We take this and this term, so this comes dx upon 4y will cancel out, and this also 2 is equal to dz upon 1 with minus sign. So we cross multiply, this is dx upon 2 is equal to dz upon minus 1 z. So this gives integrating x by 2 plus z square by 2 is equal to c1. So we can write x plus z square is equal to c1, and then we take last two, this and this, it gives dy upon 1 is equal to dz upon minus 2y. We cross multiply, so y dy is equal to dz upon minus 2, integrate it, y square by 2 plus z by 2 is equal to c2 dash, and it gives y square plus z is equal to c2. So now we find relationship between c1 and c2. And we have line, this is given. So from here z square is 1 minus y square is equal to c1, and x plus z is equal to 2. Add 1 and 2. So we'll get x plus z plus y square plus z square is equal to c1 plus c2. So this is 2 and this is 1 is equal to c1 plus c2 is equal to 3. We put in this x plus z plus y square plus z square is equal to 3. So this is the answer. अब surfaces orthogonal to a given system of surfaces करते हैं. पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं and then we will solve the questions.